Hey guys, welcome back to my channel. मेरा नाम है अमन और मैं वीडियोस बनाती हूँ मेकअप फैशन एंड लाइफस्टाइल के रिलेटेड. सो बेसिकली आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होगी. आपको टाइटल से पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो है रिलेटेड प्रेगनेंसी. सो इट्स लाइक कुड बी बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर पोस्ट प्रेगनेंसी में मैंने क्या फेस किया. सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं. बट जस्ट पुटिंग आउट द डिस्क्लेमर देयर, आई एम नोवेयर गायनोकोलॉजिस्ट और डॉक्टर और एनीथिंग. मैं सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. हर किसी की जर्नी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थोड़ी डिफरेंट होती है. सो विल गेट इनटू दैट. सो without any further ado, let's get started with the video. सबसे पहले I'll let you know कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, but I think I'm going to divide into 2 parts or 3 parts. Let's see. So guys, सबसे पहली बात, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई गायनोकोलॉजिस्ट नहीं हूँ. हर किसी की जर्नी, हर किसी की हार्मोन्स, हर किसी के डिफरेंट होते हैं. सो मैंने सोचा मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. फर्स्टली गाइज, व्हेन यू गेट प्रेग्नेंट और इवन बिफोर प्रेगनेंसी, आप सोच भी रहे हैं, a lady goes through a lot of emotions. मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ. was really going through a emotional turmoil. जब आप सोचते हो कि आपको बेबी चाहिए, यू वांट हैव बेबी. फॉर मेन इट्स वेरी इजी टू से ओके लेट्स स्टार्ट द फैमिली. बट आई थिंक जो उससे गो थ्रू करती होती है वो है विमेन. एंड यू गोटा बी वेरी इमोशनली स्ट्रांग फॉर दैट. जब मुझे था कि ओके दिस इज द हाई टाइम आई वांट हैव, बिकॉज इट्स अ प्लान बेबी. ओके, so I thought it's a high time I want to have a baby, I was actually going through a very emotional turmoil. मुझे बहुत अपने आप को समझाने में लगा टाइम कि is it's the right time or I should. There's so many question goes behind it. अगर मुझे आप चाहते हो कि क्या इमोशनल से मैं गुजरी थी, I can totally come up and talk to you. Just let me know. मैं आपसे उसके बारे में भी बात कर सकती हूँ. बट अभी अगर मैं वो करने लगी तो it's gonna be too long. So let's keep it short and crisp. So I was definitely going through a lot of emotions. There was so many questions going in my head. So what the first thing you can do is basically, as a woman, do sit with your partner and talk about it, or your partner or your boyfriend, whoever it is. You really need to sit down and take it out, or to whoever you think. Not only partner, आपको जिसके साथ comfortable लगता है, please go have a chat with them, or even for the matter of fact to your gynec or your doctor, whoever you think. So when I was going through, I spoke to my husband about so many things. I had to take that baggage off my shoulders. I really needed to think. I had to wanted to have a very clear picture कि मुझे क्या चाहिए, मैं कैसे करूँगी डील. Anyways, so then comes the pregnancy part. कि जब मैं ready थी, I was like, okay, this is the time I really want to have a baby. So the first time I tried and I couldn't conceive in the first go because it was a planned baby. Then when it didn't happen for the first time, I was not upset. I was not distressed because it's okay. It was just the first time, we didn't know. What I did was I downloaded an app. It was called ovulating app or something. I'll definitely find it. I forgot the name, guys, but I'll definitely find the app and I'll put it, or I'll link it in the description box, or I'll mention the name somewhere here or in the description box below for you. So I got this app, I downloaded that app. उस ऐप में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे जो आपको फिल करना होता है फॉर्म, लाइक योर नेम, योर एज, your height, your weight, when you're going to have your periods, what date, for how long. This bunch of questions you have to answer. Once you do that, और जो मैंने भी किया, then I think मैंने उसके बाद मेरे जब menses आए या periods आए, and I've actually feeded each and every detail for how long it was, when it finished, what date. Then it tells you the exact date. I mean, of course, it's an app, guys, so you can't totally rely on that. And it works for some people, it doesn't work. For my sister-in-law, it doesn't work, I think. So what happens, it tell you when is the highest chances to conceive. So it'll tell you like 80% on this day, or 90% or 99%. So when second time I tried onto the 99% chances it was showing that you can conceive. So मैंने second time तब try किया, and उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया. I wanted to wait for my next period to come. My menses didn't come, so I was like, you know what, I want to give it a go and let's see. And I was positive with God's grace. Thank you. It was a big thing for me, of course, with a lot of responsibilities and a lot of things were coming with it. Now, I went to the doctor and told her this is what happening, what should I do? Because as an Indian, there's so many questions I had. And having a first baby, of course, you have so many questions. And in India, you can't eat this, you can't do that. There was so many things going in my mind.
was like, you know what, I need to clarify. So the first thing what doctor told me, guys, was she said, live normal life. Okay, live like a normal human being. Okay, you're having a baby, which is definitely a different thing, but don't make it too exaggerated for you. Just make it as a very normal part of your routine now. Of course, you can't do lifting and then heavy, stuff. Don't too much bending and stuff, but behave like a normal. Go to work, do household chores, and while for eating, she said, eat anything. That's what was recommended to me. देन कम्स माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर. बहुत लोग डिफरेंट होते हैं, एवरीबडीज बॉडी इज डिफरेंट, एवरीबडी बॉडीज बिहेव्स डिफरेंटली, उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं, अपसाइड डाउन, देयर इज टू मेनी थिंग्स हैपनिंग बिकॉज यू आर गोना गिव अ बर्थ टू अ ह्यूमन बीइंग, to a baby. So there's gonna be too many things going on in your body, but with God's grace, touch wood, touch wood, touch wood, I just vomited once in my entire pregnancy, only once. I didn't have any morning sickness, any car sickness, nothing. Touch wood. I didn't have any of those. So I really can't comment on that. During my pregnancy, I was working. I worked till the last week of my due date. मैंने पूरे एंड तक काम किया था बिकॉज आई रियली वांटेड टू वर्क एंड स्पेशली जो लास्ट का मंथ था, लास्ट 2 months, आई यूज टू मॉप माई हो. जनरली मैं हैंड मॉप यूज करती थी, बट स्पेशली दोज लास्ट 2 months आई यूज टू सिट डाउन and mop my whole floor because I really wanted to have a really desperately just wanted to have a normal delivery. I never wanted a C-section. So इसलिए मैंने और एक्सरसाइजेस की, हल्की फुल्की की. आई यूज टू वर्क माई नॉर्मल आवर्स. I used to start my work in the morning, 7 o'clock, and used to finish at 4 o'clock. I was working 5 days a week. Very normal thing. What I was used to do when I didn't have a Jordan, when I was not pregnant, the things I was doing, I was exactly doing the same things during my pregnancy. मैं खाना ठीक खाती थी, घर का खाती थी. So I have done all the basic things. The only one problem which I faced in my third trimester. So first, second trimester was okay, as I mentioned. Nothing was wrong. Touch wood, with God's grace. I just had once vomiting. That's it. Nothing else. Third trimester, I got this pain on my side hip to my leg. That's called sciatica. सो व्हाट हैपेंस, उसमें मैं इतना लिम्प कर रही थी कि 1-2 दिन से नहीं चला गया. आई कुडंट वॉक, आई कुड बेयरली वॉक एंड आई कुडंट बेयरली मूव. वैसे भी आप बहुत, आप थर्ड ट्राइमेस्टर में होते हो तो इट्स रियली हार्ड टू एनीवेज मैनोवर मच, बट उसकी वजह से इट वाज रियली रियली हार्ड. तो मैं गई थी फिजियो पे, एंड देन व्हाट शी रिकमेंडेड मी वाज लाइक, यूज अ बेल्ट सो दैट एवरीथिंग. सो बेसिकली व्हाट हैपेंड, जो बेबी था वो एकदम से ग्रो किया, जिसकी वजह से अंदर का वो जो सब ढांचा होता है ना, अंदर के सब मसल्स और एवरीथिंग जस्ट एकदम से मूव कर गए. सो जिसकी वजह से मुझे साइटिका पेन शुरू हुआ था. जो मैंने 2 टाइम, आई थिंक ट्वाइस, आई वेंट फॉर अ फिजियो एंड देन शी गिव मी अ बेल्ट टू टाइट अराउंड अपने हिप एरिया पे, अच्छे से बैक पे हिप पे tightly so that everything stays in the place. And I kid you not, it worked so well. Those two physios and that belt, आई वॉज बैक टू नॉर्मल. मुझे आई थिंक वो पेन हार्डली 2 या 3 दिन के लिए हुआ था. उसके बाद मैंने वो बेल्ट यूज किया एंड आई वॉज परफेक्टली फाइन. सो ये था मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर. देन कम्स टू द प्रेगनेंसी पार्ट. आई थिंक मैं इसके लिए आपको सेकेंड पार्ट बनाऊंगी इसका, बिकॉज अदरवाइज दिस वीडियो इज गोना बी वेरी लॉन्ग. सो आई थिंक ये वीडियो मैं यहीं एंड करूंगी एंड आई विल टेल यू in the second part during my delivery time and my postpartum as well. So stay tuned for that, guys. Thank you for watching.